So hi guys, today I have someone on Ronversations who needs no introduction. She is an actress, she's a fighter and a fellow Mumbaikar like me who is now in Dubai, and I have to welcome you to Dubai. Thank you. It's Ronversations, I like that word. Yeah. Interesting. Ronak ke saath Yeah, conversation absolutely. for Ronversations. It's a little cheesy but No, chalta so hai. what? I'm looking forward to the Ronversation. Awesome. So what brings you to Dubai? Z5 and Broken News. So my show Broken News, Goldie and our production house Kaduranga, which releases Yes, now. yes. So we have and Mithya, which had released before Broken News. So we've had back-to-back three shows with our tie-up with Z5. So that's what brings me here. Okay, so I'm a film reviewer, like I told you. So, do you read reviews? Do you actually give importance to what reviewers say and critics say, right from the time that you have been doing movies? You know, when you say nice things, we are human beings, we love it. And when you say not nice things, I can block it out. But that's a good approach because reviewers can be a little No, scathing sometimes. constructive criticism is always welcome. All right, and this whole comeback phase of yours. So, how exciting was it? Like, were you nervous on the first day of the shoot? लगा के शायद याद होगा कि नहीं. Yeah, अब कैसे everybody करना told है? me it's like being on a bicycle. If you know cycling, वापस आप चढ़ जाओगे तो आपको आ जाएगा. But it's easy for people to say, but when you have to do it, it's just like, oh my God, will it really happen or not? So yes, you're right. I was very nervous. लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, but इसलिए भी क्योंकि बहुत चेंज हो गया है. एक्टिंग की स्टाइल, काम करने की स्टाइल सब बहुत चेंज हो गया है. आई वॉज वर्किंग विद एक्टर्स विच इज़ लाइक जयदीप एंड श्रिया, पावर हाउस परफॉर्मर्स. सो उनके साथ में और अगर आप उनके OTT पे शोज़ देखो तो ये जो मीडियम है OTT का, उसके ये दोनों मास्टर्स हैं. और ये मीडियम एग्जैक्टली मैं पहली बार इस मीडियम में आ रही थी, तो ये हर मीडियम का अपना रिदम होता है, तो ये रिदम मेरा नहीं है. सो इन सब चीज़ों को लेके आई वाज डेफिनेटली वेरी नर्वस. पर यू आर प्लेइंग समबडी फ्रॉम आवर लाइव्स, आप एक न्यूज़ रूम में एक एडिटर का रोल प्ले कर रहे हैं. आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन. सो आई वांट टू आस्क यू, हाउ डू यू गेट योर न्यूज़ फिक्स डेली? क्या सोर्सेज से लेते हैं आप न्यूज़? Online, do you follow like news channels and all that? And do you watch the debates that happen every day on news channels? But online it's not debates. हाँ नहीं जो टीवी पे होते इसीलिए मैं ऑनलाइन. अच्छा, आप भी मेरी तरह ऑनलाइन. हाँ, लाइक मैं भी वही करता हूँ. नो नॉनसेंस जो है वो बताओ. ओनली न्यूज़. या सो 5 साल से मैंने भी वही यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स नहीं देखे, सिर्फ पढ़ा है और दिया है न्यूज़. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस करंट न्यूज़ बिजनेस सिनेरियो जो चल रहा है इंडिया में और हर जगह? आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चल रहा है, जो अलग अलग जोन से, बट इट्स द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड आई फील. और आई थिंक इसीलिए ब्रोकन न्यूज़ इतना रेलिवेंट है. Correct. क्योंकि आई रिमेंबर कि व्हेन ग्रोइंग अप हमें घर में बताया जाता था जनरल नॉलेज होना चाहिए, पेपर पढ़ो. हाँ. यानी कि आप न्यूज़पेपर के साथ कौन सा वर्ड अटैच होता था? नॉलेज. इंफॉर्मेशन नहीं, नॉट इंफॉर्मेशन, नॉलेज. Knowledge was, there's a difference between information and knowledge. Okay. And growing up, या मेरे पेरेंट्स या earlier, न्यूज़पेपर्स के साथ हमेशा नॉलेज अटैच होता था कि जनरल नॉलेज देखिए, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, सुबह रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि जनरल नॉलेज होगा. नॉलेज के साथ अटैच होता था हमेशा न्यूज़पेपर्स. लेकिन अब जो है न्यूज़ वो नॉलेज के साथ अटैच नहीं है. एंड इफ़ यू लुक एट इट लाइक दैट, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स बोलते थे वो एक जैसे पत्थर की लकीर हो गई. So there was nothing called fake news. So you have to take a step back and once you understand कि ये knowledge नहीं है, ये information है और ये किसी का point of view है. इसका मतलब ये नहीं कि आपका point of view भी यही होना चाहिए. Correct, या इसका मतलब ये नहीं कि ये point of view सही है या गलत है, but एक point of view है. Correct. अब आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए और डिसाइड कीजिए कि ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा होना चाहिए या नहीं. ये नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करें. सो आई थिंक ये जो फेज़ आया है, और ये आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से है कि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिटरली अगर हम हमारे बच्चों में देखें तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है और ओपिनियंस है बहुत सारे. हाँ, सो आई थिंक ये डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है.
और आई थिंक ये शो इसी चीज़ों के बारे में बात करता है. सो कहीं पे मुझे लगता है कि ब्रोकन न्यूज़ जैसे जो शो है वो जो आपको अभी के जो न्यूज़ बिजनेस की रियलिटी बताते हैं, जब आपको समझ में आता है कि बिहाइंड द सीन क्या चलता है, How is news? क्या, क्योंकि ये बिजनेस है और उसकी अपनी खींचातानियाँ क्या है, Right. ये जब समझ में आने लगता है तो अगली बार जब आप न्यूज़ देखोगे तो आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ देखोगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन फॉर टुडे. Absolutely, and you know, I don't want to focus so much on the news and the very Yeah. heavy part. I want to go also back to the 90s जब आप काम करते थे, रोज सुबह उठ के सेट पे जाते थे, तो कौन सी ऐसी चीज आप मिस करते हो सबसे ज्यादा उस टाइम About की? the 90s? Yeah, about the 90s. Not really many things. It's strange. I think क्योंकि मेरा नेचर वैसा है. I've never been the kind who lives in the past. Okay. Because past was lovely और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है. आज जो भी हूँ उसकी वजह से हूँ. So I really like it in the sense मेरे ऐसे I don't live in past. Okay, but the one thing you don't miss at all कि चलो at least ये अब नहीं होगा मेरे लाइफ में. You know, you should never say never, क्योंकि जैसे ही आप never बोलते हो ना वही चीज़ होती है. So ऐसे नहीं है कि मैं ये चीज़ मिस कर रही हूँ या ये चीज़ मैं मिस नहीं कर रही हूँ. I can say one thing कि अभी मुझे अच्छा क्या लगता है ये मैं बता सकती हूँ आपको. जैसे मुझे अच्छा लगता है कि I have when I used to work literally एक हीरोइन होती थी, उसकी हेयरड्रेसर होती थी, उसके अलावा they were all males. And now my team itself is all women. So you know, I really enjoy the fact that there are more women in our line of work. There are more women behind the camera. There are more women in the creative side. So I'm enjoying that. I like that. And also the process has changed, right? अभी workshops होते हैं, काफी सारा. जी, process is also there, but I think this makes a huge difference because the comfort on the set is different. It's a lot more, yeah. Yeah, it's different. Which you didn't realize कि you know जब तक वो नहीं होता है, Yeah. उस टाइम पे ऐसे नहीं लगता कि ओह मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन जब आज मिला है तो यू रियलाइज कि यार वो उस समय भी होता तो कितना मजा आता. और आपने काफी लाइक यू नो व्हाटएवर मूवीज यू हैव डन विद बिग हीरोज, बट डू यू हैव योर पर्सनल फेवरेट्स देयर, लाइक इनके साथ जब काम करना होता तो सबसे ज्यादा मजा आता था? But you know, I have always had great relationships with all my co-stars, and you know, मतलब in that sense, if you see, I think I've done maximum films जो मैंने की हैं वो अजय देवगन के साथ की हैं. So I have great equations with all of them, and there's no. Saif used to be great also because you know he was fun and he read a lot, so you could speak, you could talk about a lot of things, and and all of them have their own quirks. And one thing I'll tell you that none of them are where they are, you know, just by fluke. They are all extremely hardworking, and they have it in them, that X factor. They are a star for a reason. They're all good actors and very hardworking and focused, and that is why they are where they are. और कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपके पास जो आप शेयर करना चाहोगे फ्रॉम द टाइम कि जैसे आई यूज्ड टू वर्क विद अन्ना फॉर अ व्हाइल, तो वो कई सारी स्टोरी शेयर करते थे कि कैसे सेट्स पे क्या क्या होता था, एंड लॉट ऑफ फन स्टफ ही यूज्ड टू टेल अस. तो लाइक Yeah, probably he had more fun than I did, so must be. But I always had my books, which were my best friends, and so that was for me set. So see, for me, my work life and my personal life was very compartmentalized, and I've always been able to keep the difference between the two, and that I think keeps me sane and normal and grounded. So I love that differentiation. और आजकल का जो अभी फिलहाल कल्चर चल रहा है, so I will also say that my friends, so to say, were Goldie, who was starting out. Because I met Goldie on the film, on the first film that I was shooting for, which was Naraz with Bhatt Saab. And Goldie वहाँ पे सेट पे आए थे because भट्ट साहब की उनकी नेक्स्ट फिल्म उनकी जाने वाली थी फ्लोर पे, और वो राइटिंग के लिए आए हुए थे उनके साथ में. So I met him there, and you know, then I did that film that he was writing for his production. So he was my friend. Major Sape with Ajay Devgan. Abhishek was he was our production boy. He was driving, he was taking care of the production, he was doing all that stuff. I knew Abhishek from there. I got to know Hrithik because of Goldie. So you know, I would say my friends in films, if you go to see, have been these age group
rather than the older age group. Oh, okay, So I worked with them, but my friends were these. But you hung out with Yes. these guys. Yeah. Okay. So that's why I know you're asking, and I might sound like I don't have anything to say, but that's the reason why I don't have. I get along with all of them, but I don't have these stories with them because my friends were always these. हाँ अच्छा मतलब अपना काम करके you would then Yeah, just go because back to गोल्डी your उस life. समय शुरू कर रहा था. Like I said, अभिषेक उस समय एक्टर भी नहीं था, वो प्रोडक्शन बॉय था हमारी फिल्म पे. You know, so Dugu was Goldie's friend. So हम Right. लोग उधर से we would hang out. So हमारे फ्रेंड्स मेरे अलग थे. एंड जो एक्टर्स जिनके साथ मैं उस समय काम कर रही थी, आई ऑलवेज न्यू देम वेरी वेल, आई गॉट अलॉन्ग विद देम, लेकिन दोज आर नॉट द मेमोरीज. दैट्स व्हाई आई एम हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम थिंकिंग ऑफ. No problem. Of course, it's such a huge, like the question itself is so overwhelming. Yeah. कि आप इतने सालों का कहाँ से एक हाँ, निकाल के लाओगे, of एग्जैक्टली. course. एंड यू नो, True. But like and I know, like, you know, typically, I mean, this is typically जब ये सवाल पूछा जाता है, then you know, you tell them कि ये prank किया, ये वो हाँ, किया, and all of that. But I don't know, I'm not that person. So Okay. yeah, you try to think of it, but I also don't enjoy pranking people so much. Really? Because sometimes I think it is a bit rude also. yeah, practical jokes. Especially when you're working, it's distracting, you know. So sometimes it's not always that I think it's the best thing to अब do. वो stories बहुत आती थी पहले. Exactly. It was a mandatory thing. And अगर आप नहीं बताओ तो उसके आगे और कुछ पूछा ही नहीं जाता था. You had to be able to give that story, otherwise interview ही नहीं होता Interview था नहीं हमारा. होता It was so weird. But that I think is the good thing about social media. क्योंकि अब you know you don't have to depend on A journalist people coming and asking you and having their opinion about you. True. So people know you for what you are. Correct. And so today the world has changed a lot. Yeah. Movies अभी भी बहुत सारी आती है, लेकिन जिस तरह का रिपोर्टाज होता है जो आप शो कर रहे हैं उसमें Yeah. भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी बोली जाती है, लाइक बॉयकॉट बॉलीवुड सडनली बिकम सो बिग. तो हाउ डू you, let's say if you were in that space right I now, hope I'm never in that space. But so कैसे do not even deal- manifest it, please. देख बट अब तो हो रहा है, तो how would you deal? आप क्या what is your take on that? No, I would say that it's unfortunate, very, very unfortunate and very, very uncalled for also. क्योंकि मुझे ये नहीं सुनाई देता कि कोई, you know, the dangerous part of whatever I say is कि I don't know what the clickbait will be. See, this No, is no, the I worry. will not. I will That's the I will worry make sure. about making any comment I about understand. anything. No, because it's- everything that you say, आजकल क्या होता है, हर Can be चीज को twisted. you want it in 2 words, और हर सवाल का जवाब 2 words में या 1 sentence में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पहलू होते हैं. सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये मेरे साथ हो, तो मैं कहूँगी कि गॉड प्लीज़ ये मेरे साथ कभी ना हो, और मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि ये किसी और के साथ हो, स्पेशली मेरी इंडस्ट्री के साथ. इस इंडस्ट्री में मैं आउटसाइडर हूँ. True. मेरा यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है, ना कोई मुझे पुश करने वाला था. Camp एंड या यू नो कोई व्हाट नहीं माय है. रेपुटेशन इज. Absolutely. आफ्टर ऑल दीज इयर्स मुझे वो भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है. माय रेपुटेशन इज आउट देयर टू बी सीन. एंड फॉर मी टू से दैट आई हैव ओनली गॉट लव फ्रॉम द इंडस्ट्री. और कहीं पे भी आप काम पे जाओगे, आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे. चॉइस आपके हाथ में होती है कि आप किसके साथ एसोसिएट करते हो. इसमें मैं थैंक करूँगी कि मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है, वहाँ पे आई थिंक अपब्रिंगिंग इस तरह की रही है, जो संस्कार रहे हैं वो जिस किस्म के रहे हैं, उसमें मैंने जो चॉइसेस किए, मैंने उसके बेसिस किए. मतलब आई डोंट से कि ओ मैंने कुछ सही किया या गलत किया. जो मुझे सिखाया गया था, जो मेरी समझ थी, उसके हिसाब से मैंने किया. एंड उस टाइम पे ऐसे नहीं लगता था कि ऐसे भी लगता था कि यार आई विश मैं कुछ और कर पाती, आई विश वो हो पाता, लेकिन नहीं हुआ मुझसे. दैट वॉज नॉट माई जोन. सो what I am trying to say is that as an outsider, I have found an entire career here. I found friendship here. I found a family here, and I've only got love from people. When I went through my illness, it's because of the industry that I came from and what I did as work. I got so much love. I did not know that I was so loved. I did not know it. सब एक्टर्स को मिलता है प्यार, लेकिन जिस किस्म का प्यार मिला है वो अनथिंकेबल था मेरे लिए. सो कहाँ से आया वो प्यार? मुझे सिर्फ मेरे काम की वजह से जानते हैं, मतलब बॉलीवुड की वजह से जानते हैं. सो जब लोग बॉलीवुड को नाम रखते हैं या बॉयकॉट बॉलीवुड कहते हैं, तो फॉर अ पर्सन फ्रॉम दिस बैकग्राउंड इट हर्ट्स मी, बिकॉज मुझे जो भी आज तक मिला है वो इससे मिला है. और ये मेरी कर्म भूमि ये रही है, मेरा कर्म ये है. बॉलीवुड हैज़ गिवन मी
my bread, butter, and the jam on it. So I'm so grateful for it, and I don't see why I would not like what is there. और जहाँ पे आप बोलो, there are all types of people in every industry, in every type of work, and you meet, and there are a lot of choices that we all make, and sometimes we are lucky that you could make certain choices. Sometimes people are not lucky कि उनके पास choice ही नहीं होता है. So you never know, you know, At least कि you किस had- हिसाब से लोग Yeah. क्या decision ले रहे हैं. So I don't think we should be judgmental about it, क्योंकि किस background से आ रहे हैं, किस चीज़ को अपने कंधे पे लेके आ रहे हैं. You never know क्या बोझ है उनके कंधे पे. Absolutely. And you know, you spoke about your fight against cancer, and you know, when it happened for the first time, तो सबसे पहला thought क्या आया था आपके mind में? Disbelief, विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हो रहा है. Acceptance. हाँ, was- विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे मेरे साथ साथ क्यों हो हुआ. रहा है. Yeah, And who was your biggest pillar of strength at that my time? husband. Stood through you. Yeah, my husband and my family, my sisters, my family, my sisters-in-law, everybody. Both of our families, in the sense of, when I say my family, I mean that, because the Everyone, whole yeah. point is that when you, I think you can have a relationship, but when you marry, it's families. The whole family comes Yeah, together. it's families. Yeah. And where is this Sonali Bendre 2.0 going from here? Like we're very happy to see you back, and mashallah, you're looking like $1 million really. Thank you. And I cannot. I don't know stress where that I will go from here, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कहीं पे जैसे आपने कहा 2.0, I've come with a different set of mind now. I am looking forward to the journey and the process, क्योंकि पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई और काम कर रही थी तो it was because I needed the money. और आज जब मैं आई हूँ, मुझे ट्रूली जो चीज़ मुझे मिली है उसकी वैल्यू आज पता चल रही है. Right. उस टाइम पे मुझे उसकी वैल्यू नहीं थी इतनी, क्योंकि मैं जस्ट एक के किए जा पीछे रहे थे, काम किए किए जा रही थी. मुझे वो रिफ्लेक्शन या सोचने का मौका नहीं मिला था. आज मुझे वो मौका मिला है, और जब वो मौका मिला है तो आई रियलाइज़ कि मैं कितनी लकी हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, क्योंकि बहुत लोग आते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और मुझे वो मिली. सो अगर मुझे ये दोबारा चांस मिल रहा है तो आई वांट टू एंजॉय द प्रोसेस, यू नो. और मुझे आई वांट टू, मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं रही हूँ, मैं ट्रेन्ड डांसर नहीं रही हूँ, तो इस बार आई डू वांट टू यू नो एंजॉय द प्रोसेस ऑफ creating Yeah. something. Yeah. And new characters. And Yeah, so that stories. creative process is what I'm looking forward to. Great. I really enjoyed this interview, let me tell you. Thank you. And I came really prepared with all the questions I Yeah. thought through the night. पर मैंने एक छोटी सी गेम रखी है जो मैं हर सेलिब्रिटी के साथ खेलता हूँ. Okay. तो ये इतना हैवी के बाद थोड़ा फन Sure. स्टफ हो जाए, I'm फटाफट sorry, हो जाएगा. I didn't mean it for it to be heavy, लेकिन you know, No, it's very touching, that You topic. talk from heart, and which Yeah. is all that everybody wants to see and hear, you know. So Yeah. that's kudos to on that. And this game is called word to word. तो मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपके माइंड में जो भी पहले आता है आपको बोलना है, ठीक है? ज़्यादा सोचना नहीं है. Oh, dangerous. अगर आपको नहीं आता तो कुछ नहीं आता तो आप वो भी बोल सकते हो कि I don't know, whatever. I'm sure you are very smart to deal with Let's this try. game. Let's try. Okay. सबसे पहला वर्ड है गोल्डी. My world, रणवीर या सन. my heart. बॉलीवुड. Karan. ब्रेकिंग न्यूज. Breaking news या broken news? ब्रोकन न्यूज. Sonali 2.0. अरे वाह. So this one I Thank give you you. Okay, for I'll the take word. credit for this. Boycott Bollywood. Sad. The 90s. Oh my God. Learning. The 90s music. Oh, love. Me too. The one thing you never leave your home without. What do I never leave my home without? Now तो it's become phone, yeah. सबका ये आंसर होता है. क्योंकि क्या करे, पूरी वही सबका. सब कुछ तो हाँ. I know. One Maharashtrian festival that you enjoy the most. I enjoy Ganpati Bappa. That's the It's festival coming now, yeah. Yeah, absolutely. One Marathi word you use the most. Come on. There's so many. I'm sure you're thinking of one. You know, can I say this? I'm to all the Maharashtrians who are watching this. I will say this: that there's a word that Maharashtrians love to use, Yeah. and which is kashala. Kashala. Huh? What does it mean? Why? Why?
And it's used in a very this thing way. Anything that you want to do, you tell a Maharashtrian that, we'll do all of this. Kashala. So Maharashtrians are very content kind of people, you know. They why will to say, do? why, kashala. So I think that is the word that I think us as Maharashtrians And do. my friends also use this makkai about Makkai. makkai. That is then what? What else? What is new kind इनको of नहीं a पता, zone बता that is, देते. yeah. But I think for me, I would say kashala because that is, I think, what would encapsulate Maharashtrians for me. Maharashtrians, I find absolutely. all the Maharashtrians in my life, that is the kind of thing that live. Why so hectic? बरोबर. Let's calm down a bit. Then Mumbai, what comes to your mind when I say Mumbai? I love Dubai? food. Food, huh? Okay. Yeah. So have you tried anything here? Yeah, Like, always. what, hummus kubus? No. I mean, I love the restaurants that are there, so you get to eat really good food. And you get all cuisines here. So वो तो कोई problem ही नहीं है. And last film you saw in the theater? RRR. Okay, you haven't seen anything after that? RRR just came out. काफी टाइम हो गया उसको भी. कहाँ यार? अभी तो बहुत सारी आ गई फिल्में. कौन सी? You should catch something. कितनी सारी भूल भुलैया आ गई, कितनी सारी आ यार गई. भूल भुलैया I wanted to see in theater. I missed that, yeah. Yeah, you can try something I'll here. try. यहाँ पे बड़े अच्छे screens होते हैं. A film that you shouldn't have done. I shouldn't have done. There is no film like that. A film that you should have done. Because what I shouldn't have done taught me more than what I should have done. Okay. So, very important lessons. Okay, a film you should have done. कि आई आपने छोड़ दी. वो छोड़ दिए अभी जाने दो. Current heroine who can play you in your biography. Nobody. Really? Yeah. You can play yourself actually. No, I मैंने don't कल like सोचा था. biographies. You don't like biographies. No, You no, don't not want to. mine. I mean other people's. Okay. I would like to play roles. I would maybe, if I have to think of, maybe we can think of some biography to play. But my biography, you make me sound like I should be in my grave. I'm not. अरे no. I'm just beginning. मतलब अभी नहीं 50 साल के बाद. 2.0. बाद में तो मतलब you'll do so many other things. I'm sure there will be more content. Finally, if you hadn't been an actress, what would you have? I don't think I would be anything else. Okay, and one of the actors you think was your biggest competitor in the 90s? Come on, like this you have to give me. No, but I didn't think, I thought everybody was better than me. Okay. So I didn't think I was the competition because I came so not trained. Okay. If you read any of my interviews, you would always hear that the kind of actor I came, if I was a producer, I would never give myself Oh, you work. would never? Because I was so not trained and I was learning on the job. So I felt like, I didn't feel like I thought they were all so much more prepared and, on the ball. So yeah. Well, one thing that most 90s actresses have told me, whoever has spoken to Raveena, Juhi, all of them, कि वो सेट पे जाते थे एक सेट से दूसरे से तीसरे तो like टाइम ही नहीं मिलता था सोचने का काफी कुछ चीजें तो. Yeah. And finally, your experience on Conversations. On Conversations, interesting, and I do hope Conversations is not going to be only about clickbait. He promises that it will not be, so I'm looking forward to that. All the 150,000 plus subscribers that I have, they know that I don't really, I don't speak that. I am the one who breaks the right news. Okay, super. Okay, thank you so much, and all the best for Thank Sonali you. 2.0. To you too. Thank you so much. Thank you.